थैंक यू। तो अभी वो मेहमान इस हॉल में तशरीफ ला चुके हैं जिनका बेसब्री से इंतज़ार था। तो ये वो शख्सियत तमाम बैठी हैं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन किया। इसके लिए एक शेर अर्ज़ करता हूँ। तो इकबाल का शेर है, वो कहता है कि तू जिस कागज़ के टुकड़े पे नहीं होने का लिखता है, मैं उसी टुकड़ों पे होने के कई मंजर बनाता हूँ। फकीह शहर की नज़र में एक ये भी बगावत है कि मैं कागज़ के सिपाही काट कर लश्कर बनाता हूँ। तो एक हमारे बड़े होनहार, बड़े ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल बकमाल शख्सियत, तो उनको बुलाना चाहूँगा, थोड़ा तारुफ करवाता हूँ। तो मेट्रो चैनल है, उसके सीनियर एंकर हैं, कॉलम निगार हैं, और उसके बाद राइटर हैं, पोइट हैं। तो बहुत से अल्फाज, बहुत सी तारीफ उनके लिए। तो कोई अल्फाजों का मजमू मेरे पास मौजूद तो नहीं, लेकिन आपकी भरपूर तालीम में मैं वेलकम करता हूँ मिस्टर आगा जरार। भरपूर तरीके से वेलकम कीजिएगा। इस तकलीफ को आगे बढ़ाने के लिए मैं हाथ बिन सुहेल को वेलकम करूंगा कि वो आएँ और मुझे इसको आगे बढ़ाएं। Well, thank you very much, Mr. Dishan. Now let's start heading towards the inauguration of the books. I request all of our honorable guests to please unwrap the books and show their front side to the audience. Please put your hand together. Thank you so much, all of you. Thank you so much, all of you. Now proceeding further, I want to make a humble request to Mr. IHSAN-ASHRAF to come on stage and share his views about the books. Mr. IHSAN. Bismillahirrahmanirrahim. Hello, ladies and gentlemen. My name is Ehsan, as the computer just informed you my name and everything. So, instead of explaining what I wrote in my books, I'd like to deliver my speech. And in my speech, I'll be highlighting the main points that made me forced to write the book. Urdu bhi hogi janab, tension nahi leni. First of all, I guess I would like to explain why did I write education in life. And before I go ahead, I would like to deliver the speech and you can observe. First of all, I like to say I'm much glad to see all of you here. I'm also thankful for the guests, Alhambra Hall management and the staff team. Thank you so much indeed for your great presence here. Without your presence, this day wouldn't be the memorable day of my life. I don't have the words to express myself how happy I am today, having you with me. I am today here. It's an honor for me to speak to you. And before I step ahead, I'd like to share a story with you. A story of a poor kid whose family was from the African continent, which now is being considered world's most unsafe place. There was a kid whose family lived in Indonesia for a few years, and his mother didn't have the money to send him where all the rich families went to school. So she decided to teach him extra lessons herself, Monday through Friday, 4:30 in the morning. A lot of times he would fall asleep right there at the kitchen table, but whenever he complained, his mother just
gave him one of those looks and said, "This is no picnic for me, either, bastard." By getting up early in the morning each day wasn't too easy, but focusing on the goal and following the routine helped him get an education. It made him succeed in his life. It all happened just because that poor kid refused to give up. Do you like to know what that kid is doing nowadays? The poor kid is now the president of the United States. We have countless examples of many people who were from the poor families but struggled hard, never give up, and got more than their expectations. I know some of you might have the same severe circumstances just like the US President. You can be anything you want if you don't give up and do everything that requires getting what you want. Every single one of you has something you are good at. Every single one of you has something to offer. Now you have a responsibility to yourself to discover what that is. Maybe you could be a good writer. Maybe even good enough to write a book or an article in a newspaper. But you might not know it until you write a paper for your English class. Maybe you could be an innovator or inventor. Maybe even good enough to come up with the next iPhone or a new medicine or vaccine, but you might not know it until you do a project for your science class. Maybe you could be a mayor or a Supreme Court justice. Maybe, but you might not know it until you join student government or the debate team. And no matter what you want to do with your life, I guarantee that you will need an education to do it. You want to be a doctor, a teacher, a police officer? You want to be a nurse or an architect, a lawyer, or a member of our military? You are going to need good education for every single one of those careers. You cannot just drop out of school and drop into a good job. You have to learn for it. And this isn't just important for your own life and your own future. What you make your life, what you make your education will decide nothing less than the future of this country. What you are learning in school today will determine whether we as a nation can meet our greatest challenges. You will need the knowledge and problem-solving skills you learn in science and math to cure diseases like cancer and AIDS, and to develop new energy technologies and protect our environment. You will need insights and critical thinking skills you get in history and social studies to fight poverty and homelessness, crime and discrimination, and make our nation more fair and more free. You will need the creativity and ingenuity you develop in all your classes to build new companies that will create new jobs and boost our economy. We need every single one of you to develop your talents, skills, and intellect so you can help solve our most difficult problems. If you don't do that, if you quit on school, you're not just quitting on yourself, you are quitting on your company. Now I know it's not always easy to do well in the daily life. I know a lot of you have challenges in your lives right now that can make it hard to focus on education. I get it. I know what it's like. Some of you might not have the advantages you are looking for. Maybe you do not have adults in your life who give you the support that you need. Maybe someone in your family has lost a job and you don't have enough money to go around. Maybe you live in a neighborhood where you don't feel safe, or have friends who are pressuring you to do the things you know are not right. But at the end of the day, the circumstances of your life, how you look like, where you come from, how much money you have, what you have got going at home, that's no excuse for neglecting your aims or having bad attitude. That's no excuse for talking back to your mentor or cutting class or dropping out of schools, colleges, universities. That's no excuse for not trying. Where you're right now doesn't have to determine where you'll end up. No one's written your destiny for you. Real man makes his own life. You write your own destiny
struggling hard. You make your own future. That's what young people like you are doing every day all across the world. Young people like Anthony Schultz from California, who's fought brain cancer when he was 3. He's endured all sorts of treatments and surgeries, one of which affected his memory. So it took him much longer, hundreds of extra hours to do his schoolwork. But he never fell behind. And he is headed to college this fall. And then there is Chantal Steve from Chicago, aliens. Even when bouncing from foster home to foster home in the toughest neighborhood, she managed to get a job at a local healthcare center. Start a program to keep young people out of gangs. And she is on track to graduate high school with honors and go on to college. That's why today I am calling on each of you to set your own goals for your education and to do everything you can to meet them. Your goal can be something as simple, doing your daily work, paying attention on what you do. Some of the most successful people in the world are the ones who have had the most failures. J.K. Rowling, her book was rejected 12 times before it was finally published. Michael Jordan, he was cut from his high school and lost hundreds of games, missed thousands of shots. But he once said, I have failed over and over and over again in my life, and that's why I succeed. These people succeeded because they understood that you can't let your failures define you. You have to let your failures teach you. You have to let them show you what to do differently next time. So, if you admit your fault, or if you make a trouble, that doesn't mean you're a troublemaker. It only means you need to try to act right. If you get bad grade in your class, that doesn't mean you're stupid. It only means you need more time studying. In the story of students were used 250 years ago and went on to wage revolution and found this nation. Students who said we used it 75 years ago overcame our depression, but they never give up. This is what I want from you. So today I want to ask you, what's your contribution going to be? What discoveries will you make? What problems are you going to resolve? Your families, your teachers, and we all are going to do everything we can to make sure, but you've got to have to do your part too. So I want all of you to be serious now and really pay attention on your life. Without aim, there is no life. Without education, you cannot do anything. So now I will talk about my second book, which is Beatrice कड़वे सच. तो पहले तो मैं अपने मेहमान आने गिरामी का शुक्रिया अदा करता हूँ. ठीक है जी, पहले भी किया था, दूसरी दफ़ा कर लेता हूँ. ठीक है जी. मेरे सामने अदीब हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं और दीगर शोबा अदब से ताल्लुक़ रखने वाले मुअज़्ज़िज़ हस्तियाँ जलवा फरमा हैं. यही वजह है कि मैं अल्फाज का चुनाव और अदायगी में नहायत एहतियात बरत रहा हूँ. They are my seniors, I do respect them from the bottom of my heart. हाज़रीन इकराम, इस किताब कड़वे सच को लिखने से मुतल्लिक दो बड़े मकासद पेश नज़र हैं. एक ये कि लोगों को ख़ास तौर पर नस्ल नू को हकीकत से आशना करवाया जाए. वो जो वक़्त की गुलाम गर्दिशों में फंसे हैं, इन्हें मंजिल दिखाई जाए, इन्हें भंवर से निकाला जाए. कुछ मौरखीन तारीख को इस हद तक फर्जी और गलत पेश कर दिया है कि नस्ल नू के लिए वो किसी जहर कातिल से कम नहीं. That's the reality. हमारी दरसी कुतुब और दीगर उर्दू अदब का लिटरेचर भरा पड़ा है कि हमारे आबा अजदाद फलां कार हाय
نمایاں سر انجام دیے, فلاں وقت میں فلاں کارنامہ سر انجام دیا. جو دیے they are on record, but جو نہیں دیے that's lie. That's a lie. ارے اللہ کے بندوں, کیا صدا ماضی کی لوریوں سے بھی جی بہلائے رکھنا ہے؟ ماضی پر رشک کرتے کرتے حال اور مستقبل کا بیڑا غرق کرنا ہے؟ خدا کے لیے اس کفر کو توڑو, خیالی دنیا سے باہر آؤ اور حقیقت کا سامنا کرو. آئینہ دیکھو اور خود کو پہچانو. ترکوں, افغانیوں, عربوں کی فتوحات کو اپنا سمجھ کر کب تک خوش فہمیوں میں مبتلا رہیں گے ہم؟ خدا را عملی اقدامات کرو. صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ دنیا میں امن اور خوشحالی لانے کے لیے سنجیدہ محنت کرو. کڑوے سچ ابواب میں حقیقی تاریخ کا ایک چھوٹا سا حصہ بیان کیا ہے. اور دوسرا مقصد طرح طرح کی خود کی پریشانیوں سے گھرے ہوئے اپنے بہن بھائیوں کو راہ راست پر دیکھنا اور نئی راہ بتانا ہے. اور جان لیا جائے کہ میں ان نام نہاد لوگوں کی طرح بھی نہیں ہوں جو صرف ماضی کو برا کہتے ہیں, دوسروں میں کیڑے نکالتے ہیں اور حال میں یہ بھی نہیں بتاتے کہ آخر کرنا کیا ہے. I am a little different than those guys. If I am telling you something, تو اس کا حل بھی میں نے بتایا ہے اپنی بک میں کہ آخر کیا تبدیلی لا کر مستقبل کو بہتر کیا جا سکتا ہے. برے صغیر ایشیا اور افریقہ کے حالات کو بیان کرتے ہوئے ان کا موازنہ مغربی ممالک سے کیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ کیسے جانوروں کے غلیظ سنگوں میں شراب پینے والے مغربی ممالک کے مغربی لوگ آج کیسے مہذب قوم بن بیٹھے ہیں. وہ بہت ہی اسٹوپڈ ہوا کرتے تھے یہ گورے, جانوروں کے سنگوں میں شراب ڈال کے پیا کرتے تھے. اتنے غلیظ پن کا کوئی احساس نہیں تھا ان کو, اور وہ آج اتنے مہذب قوم بن بیٹھے ہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نہ جسٹ ہمارے پاس تعلیمات ہیں, نہ جسٹ انہوں نے ہمیں بتایا بلکہ سکھایا. نہ انہوں نے جسٹ ہمیں بتایا کہ کیا صحیح کرنا ہے بلکہ اس کی پریکٹس بھی کروائی. لیکن پھر بھی آج ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اس کے بعد تیسرے باب میں نے بتایا ہے کہ کیسے ہم مختلف زبانوں کے جھنجٹ میں گرے اپنا وقت برباد کر رہے ہیں. پیدا ہو تو پنجابی, سندھی, بلوچی, پشتو, اس کے بعد زور دیا جاتا ہے اردو, اس کے بعد الیکٹیو سبجیکٹس ہوتے ہیں فارسی, پھر عربک بھی ہمارے لیے قابل عزت و احترام والی لینگویج ہے, پھر دنیا کا مقابلہ کرنے کے لیے انگلش. کہاں پھنسے ہوئے ہیں ہم؟ ایک لینگویج کو سیکھنے کے لیے, فلوئنٹلی بولنے کے لیے منیمم تقریباً 3 سال کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اب اگر 5-6 لینگویجز ہیں, اٹ مینس کہ ہم نے تو کوئی 15-18 سال ضائع کر دیے. یہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں میں بچپن میں تھا, میری تو لرننگ ہو رہی تھی. یا لرننگ ہو رہی تھی, آپ کو نہیں پتا, بٹ آپ سیکھ بھی رہے تھے. تو ہم اتنے جھنجٹ میں پڑھنے کی بجائے ہمیں چاہیے کہ سمپل, سیدھا اور وہ راستہ اختیار کریں جس سے ہماری کمیونیکیٹ ہو سکے دوسروں کے ساتھ. اب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یار یہ تو ہماری زبان اردو کے بارے میں مطلب بات کر رہا ہے یا پنجابی کے بارے میں بات کر رہا ہے. اگر سندھی ہے تو سندھی والا سوچے گا یہ کیا, سندھی کو چھوڑ دوں, آپس میں لڑنے لگ پڑیں گے, مجھ سے لڑنے لگ پڑیں گے. لیکن یار ہماری لینگویج تو پھر عربک ہے, بینگ اے مسلم. ہمیں عربک لانے کے لیے تو ہم کچھ نہیں کرتے, اپنی لینگویج 3 سال ضائع کر رہے ہیں. اردو میں ہم نالج لیتے ہیں, ایکسپینسو بھی ملتا ہے لیکن مل جاتا ہے. اب پنجابی والے کہتے ہیں جی کہ اردو, یہ ان مسئلے مسائل میں پڑے ہوئے ہیں. میں نے اس بک میں بتایا ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ 2 سے 3 میکسیمم 2 لینگویجز
एक उर्दू जो हमारी कौमी ज़बान है, इस पर तवज्जो देनी चाहिए, और एक इंटरनेशनल ज़बान जो कि इंग्लिश है, उस पर तवज्जो देनी चाहिए। ना कि जस्ट कम्युनिकेट करने के लिए। जिस तरह की हमारी कंट्री की इस वक्त हालत है, हम एक्सपेंसिव बुक्स नहीं खरीद सकते। मैं गया मॉल पे, हैरी पॉटर मुझे उर्दू में लेनी थी। मेरा ख्याल है मेरे 4-5 घंटे ज़ाया हो गए मुझे, लेकिन हैरी पॉटर नहीं मिली उर्दू लैंग्वेज में। अब मैं ऑर्डर करूं तो जनाब 5,000 रुपए की अमाउंट बना देंगे, मैं तो पे कर लूंगा, लेकिन देयर आर मेनी दे वांट टू रीड इट टू, व्हाट दे गोना डू दैट, वो क्या करेंगे? इंग्लिश लैंग्वेज में हमें सस्ता मटेरियल मिल जाता है, इंटरनेट की सहूलत भी है। चले उर्दू हमारी कौमी ज़बान है उस पर, लेकिन ये पहले उर्दू, सिंधी, पंजाबी, पश्तो, अरेबिक, ये 15-20 साल हम ज़ाया कर चुके होते हैं। 15-20 साल में हम लर्न करना चाहते हैं कि हमें कुछ करना है, बाद में पता चलता है कि हम जी 45-40 प्लस हो गए हैं, और फिर सोचते हैं कि हमारी तो किस्मत ही ऐसी है। बस इसी तरह हम लाइफ गुजार देते हैं, और बाद में पता चलता है कि जी फलां बंदा उधर मर गया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे हॉस्पिटल में फी पे करने के लिए। सो इसके लिए हमें सोचना चाहिए। फिर उसके बाद मैंने एक बाब खास तौर पर महकमा पुलिस पर लिखा है, जिसमें पुलिस की अंदरूनी हरकत और इनमें मौजूद काली भेड़ों के कारनामे बयान किए। मेरी किताब कोई, दोनों बुक्स, ये कोई नावल नहीं है। मैंने किसी को खुश करने के लिए कोई लतीफे नहीं लिखे, कोई पोइट्री नहीं लिखी, कोई शेर नहीं लिखे। मैंने हकीकत लिखी है। वो लोग जो डिसअपॉइंटेड हो चुके हैं, वो जो समझते हैं कि वो कामयाब नहीं हो सकते, ये बुक्स उनकी हेल्प करेंगे कि नहीं, दे कैन डू इट, स्टिल दे कैन डू इट। महकमा पुलिस का मैंने बताया था कि मैंने उसके बारे में एक बुक लिखी और एक चैप्टर लिखा है। उसमें मैंने महकमा पुलिस की अंदरूनी हरकत और उनमें मौजूद काली भेड़ों के काले कारनामे बयान किए हैं। और खास बात यह है कि इस चैप्टर में भी मैंने वो बात नहीं लिखी जो कि मैंने किसी कहानी से अखज़ की हो, या तो मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ हुआ है, और या फिर मैं चश्मदीद गवाह हूं कि पुलिस वाले किसी के साथ रोंग कर रहे हों, तो उसका मैं विटनेस हूं। ये सब नहीं करते, लेकिन बिग परसेंटेज जब करे तो वी मस्ट थिंक अबाउट इट। शायद मेरे इधर बैठे कुछ पुलिस ऑफिसर दोस्तों को बुरा भी लग रहा हो, लेकिन माजरत के साथ है तो ये सच। आखिरी दो बाब में मैंने जिक्र किया है कि बहुत सी दूसरी वजूहात के साथ हम इसलिए भी तरक्की से दूर हैं क्योंकि हमारी तरजीहात हमारी जरूरतों से मुख्तलिफ हैं। प्यास हमें लगी है, चाहिए हमें पानी, लेते हम मट्टी हैं खान उसके अपनी प्यास बुझाने के लिए। हमें पढ़ना है कॉलेज में, जाते हम मूवीज देखने हैं। अगर हमने रिलीजियस नॉलेज के बारे में कुछ या अपने रिलीजन के बारे में कुछ सीखना है, जाना हमें मस्जिद में चाहिए। बैठ जाते हैं हम किसी अपने उम्र से बड़े जो बंदा बातों में जीत ना जानता हो, जो भी करके, यानी जो हमारी जरूरियात हैं उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देते, और तरजीहात हमने अपनी वो जरूरियात बनाई हुई हैं जो कि बिल्कुल मैटर नहीं करती। अब आप में किसी से 5-10 बंदे इधर से पूछ लें उठा के कि आपकी प्रॉब्लम्स क्या है, वो आपको अपनी प्रॉब्लम्स बताएंगे। फिर आप उनसे पूछ लें कि आप इन प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो चुप हो जाएंगे। अच्छा हाँ यार मैं लगा हुआ हूं थोड़ा बहुत, बस ऐसे वैसे आए बाएं शाएं। और पूछे कि कर क्या रहे हैं, तो वो बताएंगे जिनका ताल्लुक ही नहीं है उनकी प्रॉब्लम्स को हल करने के लिए। यानी तरजीहात वो चीजें बनाई हुई हैं जो कि प्रॉब्लम्स हल ना कर सकें। यही वजह है कि हम जो है इस तरह नाकाम हो रहे हैं। काफी बिग परसेंटेज है हमारे लोगों की। ये मेरी इतना सी कोशिश है जिससे बनी नौ इंसान को फायदा पहुंच सके। अल्लाह से दुआ है कि मुझे हिम्मत और ताकत अता फरमाए ताकि मैं अपनी सलाहियतों को इंसानियत के लिए, इंसानियत के फायदे के लिए पुरोकार ला सकूं। थैंक यू सो मच।
so much, sir. We really appreciate your words. Now, I would like to call Mr. Ahmed to come on stage and give us a brief introduction of our honorable guest. Mr. Ahmed, please. गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। मुझे बहुत खुशी है कि हमारे तमाम मौजूद मेहमान ग्रामी तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं एक छोटा सा उनके ऑनर में उनकी जो खिदमात हैं इल्म के लिए, लिटरेचर के लिए, मैं उसको प्लीज़ आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। सबसे पहले मैं हमारा जिक्र करूँगा मिस सुगना सदफ साहिबा का, जो कि शायरा हैं, बड़े सगीर का एक नामवर नाम है, कालम निगार हैं, ये जंग अखबार में कालम लिखती हैं और डायरेक्टर पंजाबी कॉम्प्लेक्स हैं। प्लीज़ पुट योर हैंड्स टुगेदर, वार्म वेलकम फ्रॉम मिस सदफ।